Hello everyone. In this video, we will do brain teasers of chapter number 9, linear equations in one variable. This is question number 1, capital B part, and its 5 subparts will be done in this video. So I am reading the question here. Find a number whose fifth part increased by 30 is equal to its fourth part decreased by 30. So how we will write? We do not know what is the number. So I have written let required number is equal to x. Now as per the statement given, so I have written according to question, fifth part x upon 5 increased by 30 means plus 30. It is equal to fourth part x upon 4 decreased by 30 means minus 30. Now all terms of x to be brought to the left side, x upon 5 minus x upon 4. ये प्लस x अपॉन 4 की टर्म लेफ्ट में आएगी, माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू -30, और ये जो +30 लेफ्ट में है ये राइट में जाके -30 हो जाएगा. LCM of 5 and 4 will be 20. 20 divided by 5 is 4. 4 into x is 4x. 20 divided by 4 is 5. 5 into x is 5x. And -30 will be added. They will become -60. 4x minus 5x होगा minus x upon 20 is equal to -60. माइनस माइनस कैंसिल कर दो. x is equal to 20 will multiply 60, 20 into 60. So it is equal to 1200. So what was asked in the question? Find a number. Therefore, required number is equal to 1200. Now, after doing first part, let's proceed to B part. So I am reading the statement. Raman had 30 flowers. He offered some flowers in temple and found that the ratio of remaining flowers to that of flowers in the beginning में कौन से flowers थे? 30. The ratio is 2:5. Find the number of flowers offered by him in the temple. So let's proceed. First we will write total number of flowers. So total number of flowers, how many are given? These are given 30. We do not know how many flowers are offered in the temple, so we will assume let number of flowers offered in the temple. So in the temple, how many flowers are offered? We will assume that x. After offering x flowers in the temple, how many flowers will be left? Means number of remaining flowers. Total were 30 in the beginning. X were offered in the temple. So left flowers are 30 minus x. Now as per the statement, what is written? That after offering the flowers in the temple, he found that the ratio of number of remaining flowers, तो ये remaining flowers to the flowers in beginning में कितने flowers थे? 30. And this ratio becomes 2:5. अब आप सेम प्रोसीजर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5 into 30 minus x is equal to this 2 will multiply 30. So solve. 30 into 5 is 150 minus 5x is equal to 32s are 60. Minus 5x is equal to 60 remains here, plus ka 150 will come to the right side, minus 150. So minus 5x is equal to 60 minus 150 will be minus 90. Minus minus cancel. X is equal to 90 upon 5. And when we divide 90 with 5, 18 5s are 90. Now he is asking find the number of flowers offered by him in the temple. Therefore, number of flowers offered in the temple.
So we have assumed these as x. So x value we have got as 18. So 18 flowers were offered by Raman in the temple. Now we will proceed with B subpart's solution. C subpart, I am reading the statement. The tens and ones digits of two-digit number are same. I repeat, tens and ones digits of two-digit number are same. So I have written let digit at ones place, it is x, and let digit at tens place. He has told that these are same, तो टेंस प्लेस पे भी वही डिजिट आएगी जो वंस पे ली है, मीन्स एक्स. सो वी विल फ्रेम हेयर ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर आपको पहले भी बताया था कैसे बनेगा. द मीनिंग ऑफ वंस इज वन. वन विल मल्टीप्लाई एक्स, देन प्लस टेंस मीन्स टेन. टेन विल मल्टीप्लाई एक्स, सो इट इज एक्स प्लस टेन एक्स. एक्स प्लस टेन एक्स कितना बना? 11x बना, right? Now he has told further when the number is added to its reverse. तो अब आप लिखोगे on reversing the digits. जब आप digits को रिवर्स करते हो तो digit at ones place, digit at ones place. तो जो डिजिट टेंस प्लेस के ऊपर थी वो वंस पे जाएगी. तो क्या थी टेंस के ऊपर? एक्स, तो यहां एक्स हो जाएगा. और टेंस प्लेस पे वो डिजिट आएगी जो वंस के ऊपर थी. तो ऊपर वंस के ऊपर भी एक्स थी, तो वो टेंस के ऊपर भी एक्स ही रहेगी. अब आप फ्रेम करोगे न्यू नंबर. प्रोसीजर इज सेम. 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स. So 1 into x is x plus 10x. तो x plus 10x फिर से कितना बन गया? 11x. अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करोगे. When the number is added to its reverse, यानी ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर उसके रिवर्स वाले नंबर में ऐड करें, then the sum is 88. So 11x plus 11x is 22x is equal to 88, and x will be equal to 88 divided by 22. 22 4s are 88. So x we have got 4. अब उसने पूछा फाइंड द नंबर. नंबर्स नहीं पूछा, ओनली नंबर. तो आप कौन सा नंबर निकालोगे? ओरिजिनल नंबर. क्या था ओरिजिनल नंबर? 11x. सो इट इज 11 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 44. फिर करते हैं डी पार्ट. डी पार्ट में उसने ये दे रखा है एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3, इट इज इक्वल टू 4/7. तो बोला सॉल्व फॉर एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 7 जो है वो एक्स स्क्र माइनस 9 को मल्टीप्लाई करेगा, और 4 जो है वो एक्स प्लस 3 को करेगा. अब आप मल्टीप्लाई करो. 7 इंटू एक्स स्क्र इज 7x स्क्र माइनस 7 9 को भी मल्टीप्लाई करेगा. 7 9s are 63. 4x प्लस 4 3s are 12. अब आप 7x स्क्र को यहीं रहने दो, प्लस 4x को लेफ्ट में ले आओ, माइनस 4x माइनस 63 भी यहीं रहेगा, एंड इट इज प्लस 12 विल कम टू द लेफ्ट साइड, इट विल बिकम माइनस 12 एंड इट इज इक्वल टू 0. तो 7x स्क्र माइनस 4x माइनस 63 और माइनस 12 ऐड हो जाएंगे, माइनस 75 बन गया 0 एंड इट इज इक्वल टू 0. अब क्या करना है? आप इसको फैक्टराइजेशन करोगे. 75 को जरा 7 से मल्टीप्लाई करो, 525. अब 525 को आपने फैक्टराइज करना है कि 4 बन जाए. सो यू कैन डू इट्स फैक्टराइजेशन. 3 1s are 3, 3 7s are 3 5s are 3 5s are 15. This will be divided by 5. 5 3s are 15, 2 5 5s are 5 7s are 35, and 7 1s are 7.
If you do 5 threes are 15 and 35, 35 minus 15 never give 4. Try something else. 5 fives are 25 and 7 threes are 21. So 25 minus 21 of course give 4. So you can write 7x square minus 25x plus 21x minus 75 is equal to 0. Now from here you can take only x common. Inside will be left 7x minus 25. From these you can take out 3 common. Inside 21 divided by 3 is 7x minus 75 divided by 3 is 25 and it is equal to 0. Now in one bracket x plus 3 will come. In other bracket 7x minus 25 and it is equal to 0. Now you can equate x plus 3 0 and 7x minus 25 is equal to 0. So x will be minus 3 and from here 7x is 25 and x will be equal to 25 upon 7. Now the question is that you have got two values. One value is minus 3 and one value is 25 upon 7. So you are not to take the negative value. So you will write neglecting x is equal to minus 3. So therefore x will be what? 25 upon 7. So this way D part will be done. Now let's proceed to E part. So E part I am reading first. Rohan brought a pack of 100 chocolates. How many total chocolates? 100. To distribute in his class. And after giving 2 chocolates to each student, हर बच्चे को 2 चॉकलेट्स दी and his class teacher, और क्लास टीचर को भी दी. Then he is left with 10 chocolates. तो कितनी चॉकलेट्स बच गई? 10 चॉकलेट्स. Then how many students are there in the class? तो अब करते हैं E सब पार्ट. We do not know how many students are there in the class. First, I am writing total number of chocolates. How many chocolates were there? 100. Now, let number of students in the class. Let number of students in the class. We do not know how many are there, so we will assume these as x. Now, it is written that the student has given 2 chocolates each to the student and his teacher also. Therefore, total number of chocolates given to how many students? x students. तो एक बच्चे को 2 चॉकलेट्स दी, तो x बच्चों को कितनी चॉकलेट्स दी उसने? 2x चॉकलेट्स. और उसने टीचर को भी 2 चॉकलेट्स दी. नंबर ऑफ चॉकलेट्स given to teacher. So these were given 2. Now after giving these chocolates, number of chocolates left. उसके पास फिर भी कुछ चॉकलेट्स बच गई. कितनी चॉकलेट्स बच गई? 10. अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे. हाउ मेनी चॉकलेट्स वर गिवन टू एक्स स्टूडेंट्स? दीज वर गिवन 2x. टीचर को कितनी दी? 2. कितनी उसके पास बच गई? 10. और सारी चॉकलेट्स थी कितनी? 100. अब आप इसको सॉल्व कर दो. 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 100. तो यहां से 2x क्या हो जाएगा? 100 माइनस 12. तो 2x की वैल्यू, दिस इज 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 इज 8. x की वैल्यू क्या आएगी? 88 अपॉन 2 मीन्स 44. क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास. देयरफॉर आपने कितने माने थे? x एज्यूम किए थे ना. तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास
कितने? 44 students. So understand the statement first. After understanding the statement, question does not remain difficult. I hope you have understood all the solutions of B part and its 5 subparts. If you have understood, like the video, comment and share in your friend circle so that other students can also learn mathematics in the most easiest way. Thank you.